Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार। मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर ऑनलाइन चर्चा के लिए आमंत्रित हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटोरियल डायरेक्टर ए.के. भट्टाचार्य। ए.के. कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं अर्जुन चौधरी। Domestic stocks rise more than 1% amid mixed global cues. Sensex reclaims the 57,500 mark. Nifty regains the 17,000 level. Rupee appreciates by 49 paise against the US dollar, and Brent crude oil climbs above $109 per barrel. मिले जुले वैश्विक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में लिवाली तेज। प्रमुख सूचकांक 1% से अधिक बढ़त के साथ हुए बंद। सेंसेक्स एक बार फिर से 57,500 के आंकड़े से ऊपर पहुंचा। निफ्टी भी 17,000 के स्तर को कर गया पार। $1 की तुलना में रुपया हुआ 49 पैसे मजबूत। और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की अब कीमत बढ़ी, $109 प्रति बैरल से ऊपर हुई। वैश्विक बाजारों से मिले जुले संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में कारोबारी सप्ताह के आखिरी दिन आज भी लिवाली तेज रही और प्रमुख सूचकांक 1% से अधिक बढ़त के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 712 अंक यानी 1.25% की बढ़त लेकर 57,570 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 229 अंक की बढ़त लेकर यानी 1.35% उछाल लेकर 17,158 दर्ज हुआ। विस्तृत बाजार पर ध्यान दें तो वहां भी लिवाली तेज रही। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 1.01% और स्मॉल कैप इंडेक्स 1.38% बढ़त के साथ बंद हुए। Sensex and Nifty today climbed more than 1%. Both stock indices logged gains amid mixed global share markets. Sensex closed above 57,550 points, while Nifty settled above 17,150 level. Sensex rose by 712 points, 1.25%, to finish at 57,570. Nifty also surged by 229 points, 1.35%, to end at 17,158. In the broader market at the Bombay Stock Exchange, the mid-cap index climbed 1.01%, while the small-cap index ended 1.38% up. In the Sensex pack, 25 companies posted gains, while 5 logged losses. Tata Steel was the top gainer as it climbed 7.3%, followed by Sun Pharma, which surged 5.5%. Bajaj Financial Services rose by 2.6%, and IndusInd Bank ended 2.5% up. On the other hand, Dr. Reddy's Laboratories stumbled 4%, and Kotak Mahindra Bank declined 1%. In sectoral indices, all sectors logged gains. The metal index was the top gainer as it surged 4.6%. Energy sector gained 2.4%. Bharti Airtel rose 2.3%, and oil and gas ended 2.2% up. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 2,058 companies gained while 1,291 fell. Shares of 122 companies remained unchanged. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 49 पैसे मजबूत हुआ, $79.26 के स्तर पर आ गया। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर्दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक 0.27% घटकर 106.07 पर चल रहा था। एकेबी पूरे कारोबारी सप्ताह में एक दिन को छोड़कर लगातार लिवाली तेज रही और आखिरकार अच्छी खासी बढ़त के साथ बंद हो रहा है। साप्ताहिक आधार पर भी सेंसेक्स और आज के बढ़त के पीछे मुख्य क्या कारण रहे आपकी नजरों में?
देखिए, जो मार्केट में मैं समझता हूँ कि एक आपेक्षिक निश्चयता का जो आभास मिल रहा है, वो अगर आप वैश्विक बाजार में देखेंगे, उसमें भी यही आपेक्षिक निश्चयता का जो एक सिग्नल, एक निर्देश आ रहा है, संकेत आ रहे हैं उसके। मैं समझता हूँ उसी के लिए जो हमारी जो डोमेस्टिक जो निजी मार्केट जो है भारत के मार्केट में, ये तेजी हमें दिखने को मिल रही है। ये जो निश्चयता का जो प्रभाव जो है, ये मैं समझता हूँ कि दो चीजों से आया है। एक तो फेड की जो 75 बेसिस पॉइंट्स की इंटरेस्ट रेट और जेरेमी पावेल साहब की जो एक आप कह सकते हैं आश्वासन कि अगला रेट हाइक इन्फ्लेशन की नजरिया को, डायरेक्शन को देखते हुए ही होगा, उससे मार्केट का एक संकेत ये मिला है कि शायद अगला रेट हाइक उतना ज्यादा न हो। पहली बात ये। दूसरी बात है जो अमेरिकन इकोनॉमी की जो कंट्रैक्शन की जो खबर जो आई है कि इकोनॉमी में रिसेशन की पहली एक संदेश मिला है, उससे मार्केट को एक सिग्नल ये आ रहा है कि शायद रेट हाइक जो लिक्विडिटी को फ्लश आउट करने का जो एक फेड का जो एक बहुत बड़ा एक कमिटमेंट था, वो कमिटमेंट में थोड़ी बहुत ढील आएगी। क्योंकि अगर इकोनॉमी में रिसेशन आ जाता है, कंट्रैक्शन हो जाता है, तब फेड रेट हाइक में बढ़ाने की उतनी जोश नहीं दिखा सकता। तो इसी कारण और हमारी जो भारतीय बाजार में जो अर्निंग्स सीजन जो है वो अच्छी निकली है अभी तक। हालांकि टॉप लाइन ग्रोथ में कमी आई है और बॉटम लाइन ग्रोथ में भी थोड़ी बहुत सेक्टर में कमी आई है, पर ओवरऑल जो मैसेज जो आ रहा है वो निश्चयता की मैसेज आ रहा है। अनसर्टेनिटी थोड़ी बहुत कम हो गई है और कितना दूर मार्केट और भी नीचे जा सकता है उसके ऊपर कोई संदेह नहीं है कि इसीलिए मैं समझता हूं कि मार्केट में थोड़ी बहुत जो उछाल जो आया है वही उसका एक निश्चयता या सर्टेनिटी का इंडिकेशन दिख रहा है हमें। AKB, despite the negative macro numbers coming out of the US, the FIIs have been the net buyers in the market in today's trade, equity-wise 1,046 crore rupees as net buyers, and they're not deterred by what's happening in the US. It's the third session that the market has gone up here, the Sensex and the Nifty, and we're seeing a surge in the metal index once again by as much as 4%, despite the duty hike and quotas being imposed on metal exports. Inventories pile up. So why this dichotomy that despite the numbers and policy not being advantageous, we are seeing the market go up, not just our market, but the US market as well? Well, I do not see it as a dichotomy. It is actually complementarity that you are seeing. What is happening right now is the news of the US economy contracting has actually strengthened the market's assessment that the Fed's action on rate hike will be little muted because the Fed will be equally conscious of the need to support growth, not just rein in inflation. So therefore, the FIIs are now recognizing that the liquidity tightening measures will not continue for long, and they are seeing an end of sorts in the Fed's liquidity tightening measures, and rate hike moves the pace at which it is going up. It is this confidence in the market that has resulted in the foreign portfolio investors return back to the Indian markets. You must also note that in the last 1 week or so, for the first time, the domestic institutional investors have actually increased their share in the domestic markets, which is more than the total foreign portfolio investor share. So what is happening in the Indian market is that not just the foreign portfolio investors are returning because of the US Fed's recent signal, but domestic institutional investors, the domestic individual investors, they are also getting into the market. So therefore, the gap between
from January to now, the gap between the net selling and the infusion of the market by the domestic institutions is actually narrowing. So what you are seeing is a complementarity between the U.S. economy contracting, therefore the Fed not likely to tighten the money markets that much at that same pace, which has given some breathing space for the foreign institutional investors to come to the Indian markets and invest their money to get returns, which is also why the rupee is strengthening. Also looking at some tactical moves on the part of companies. We mentioned about Tata Steel was a top gainer. It climbed by 7.3%. They have gone for a stock split. It appears now the face value of the share is not 10 rupees but 1 rupee, and it traded at a premium. And on the other hand, we have news from Zomato as well, where they have offered ESOPs to employees. Again, the face value is only 1, just to prevent the slide in the share value of that stock. But over here, Tata Steel saw a gain. So you see these tactical moves on the part of companies, and what would you advise investors who are listening in on this program? Well, as I've been saying, coming to the specific stocks on Tata Steel, I think Tata Steel has benefited also from recent moves in terms of some of the taxes that have been levied, and also the steel market has picked up. The construction activities has revived. So Tata Steel has actually gained, and apart from the fact that the stock, the splitting that you talked about. But on a general sense, what I would see is this, that the individual investors, one will have to keep in mind the fact that looking and tracking the index and making investment is that time is over. One has to look at individual stocks, individual sectors, and that understanding is critically important if a savvy investor were to look at and allocate his resources to be distributed in the Indian stock market. AKB, यानी आपने जो अभी जानकारी दी उसके अनुसार कि एक निश्चितता का माहौल, एक सर्टिनिटी बाजार को दिख रही है, तो क्या हम मान के चलें कि जो एक अब वर्तमान वैश्विक परिस्थितियां हैं, दुनिया भर की स्थितियां हैं, उसमें कुल मिलाकर जो सबसे जो बुरा दौर था वह निकल चुका, यानी बॉटम आउट हो चुका है मार्केट, खास तौर से भारतीय बाजार, और यहां से ऊपर उठने के ही आसार हैं, या जो आंतरिक कह लें कि अपनी स्थितियां हैं उसमें फिर से हम नीचे की ओर जा सकते? दो चीज, मैं ये नहीं कहूंगा कि बॉटमिंग आउट का कोई संकेत हमें मिला है, पर जरूर हम ये कह सकते हैं कि जो अनिश्चितता का जो एक आयाम था, जो हमें दिख रहा था कि यूक्रेन रशिया का कॉन्फ्लिक्ट, क्रूड ऑयल प्राइसेस के दाम बढ़ने का, उधर अमेरिकन इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और रिसेशन नहीं, इकोनॉमी तब भी तेजी में है। अब हमें ये दिख रहा है कि इम्पैक्ट का जो आसार जो है वो पूरी तरह सामने आ गया है। तो जब मार्केट इस दौर से गुजरता है, जब उसके सामने अनिश्चयता नहीं दिखती है पर निश्चयता दिखती है, अगर तब भी वो खराब खबर हो और बट निश्चयता से दिखती है, तो मार्केट उसको फैक्टर इन करके उसी तरह आगे बढ़ता है। मैं समझता हूं कि इस वक्त जो मार्केट में, जो भारतीय बाजार में जो देखने को मिल रहा है, वो वही ये एक अनिश्चयता के दौर से निश्चयता की ओर हम पहुंच रहे हैं। और उसके साथ साथ आपको ये भी देखना होगा कि सरकार ने पिछले हफ्ते में एक बहुत बड़ा एक ऑयल सेक्टर के ऊपर टैक्स का बदलाव की घोषणा की थी। उसका भी एक डिलेड इम्पैक्ट मैं समझता हूं स्टॉक मार्केट सेंटीमेंट में जरूर आया है, क्योंकि जो एनर्जी सेक्टर की कंपनियां जो हैं वो उससे काफी लाभान्वित हुई हैं और उसका भी एक ओवरऑल इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट के सेंटीमेंट में जरूर आया है। What about the power index? We saw uptick in the stocks in that particular index. Is it on the basis of the restructuring of discom companies which are in debt right now?
Well, I think electricity reforms are part of the government's agenda that have been promised but is yet to be realized on the ground. But what I can see is this. That the play on power sector is actually is seen in different states, and in different states we are witnessing how the distribution companies are actually trying to bridge the gap between what is their cost of buying power and the recoveries they make on selling that power. So if you look at the power companies and discoms, there is a gradual reduction in that gap, that income gap, and at the same time the government is come out with a new package of discom relief package, which when it is rolled out, it will mean a plus for the power sector, which I think is reflecting in the power sector indices. श्रोताओं, यहाँ पर हम लेना चाहेंगे एक छोटा सा विराम के बाद फिर से होंगे लेकर कार्यक्रम मार्केट मंत्र। बने रहिए हमारे साथ। उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 870-001-4242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242। Welcome back to Market Mantra, and we were discussing about market performance with AKB, Shri A.K. Bhattacharya. We call him AKB very fondly. AKB, once again, a warm welcome to you on the program. Sure, thank you. Well, AKB, we have the figures for today's market performance for the week as well. How do you expect the market to perform next week? We have some numbers coming in terms of auto sales, the PMI numbers, the GST collection figures. How do you see those numbers being estimated? What the market is actually will look out for, whether the corporate earnings, the early signals, the early birds, so to say, their corporate earnings have shown a mixed result. Some companies have done reasonably well. Even the FMCG companies have quite, dispelling the earlier fears that their margins will be badly hit. The financial sector has done very, very, very well. So I think the markets will be looking at those sectors. So you will see that sectors that have done well, for example, the financial sector will be able to see some more, the green spots on the financial sector will be more frequent. But on the general sense, there will be a tendency, in my view, for next week, there will be a tendency to book some profit because the markets have reached a certain level where sustaining this market level will be a bit of a challenge. So next 1 week, I don't rule out the possibility of markets remaining volatile and very, very sector-specific increases or declines. So one has to be very watchful because I think the earnings season will hold the key to the next 2 weeks market performance, plus of course the inflation numbers that will be coming in the second week, and even before that, what the RBI does on 5th of August, whether the RBI follows suit in terms of increasing a similarly steep rate hike as the Fed did, 75 basis points. There is an expectation that the RBI may just be happy with a 30 or 40 basis point increase. Now, if that happens, I would say that the market has already factored that in, and that will push the market further towards a realm of certainty that the known
unknowns, so to say, that you known knowns in the market are that the markets will continue to perform in this way. आइए अब चलें वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां दक्षिण कोरिया को छोड़कर अन्य सभी प्रमुख बाजारों में बिकवाली तेज रही। एक और निवेशकों की सक्रिय भागीदारी से दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.7% लाभ में रहा। वहीं दूसरी ओर बिकवाली के दबाव में हांगकांग का हैंग सेंग 2.3% लुढ़क गया। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.9% की गिरावट हुई। सिंगापुर का स्ट्रीट्स टाइम्स इंडेक्स 0.3% घाटे के साथ बंद हुआ। जापान का निक्केई 225 सूचकांक 0.1% की मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। यूरोपीय शेयर बाजार की ओर चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक वहां लिवाली चल रही थी। अंतर्दिवसीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 0.4% ऊपर चल रहा था। जर्मनी के डेक्स में 1.1% की बढ़त थी, जबकि फ्रांस का CAC 40 1.4% लाभ के साथ चल रहा था। Since we were reading out the Asian markets story, what's your take on Sri Lanka and Pakistan, which are seeking an IMF bailout? Well, why are you only talking about Sri Lanka and Pakistan? Why don't you include Bangladesh? Bangladesh is also seeking an IMF bailout. Now, the question is I'm not including Pakistan here. The economies that were hugely commodity dependent in their economic, growth calculations, I think have taken a big hit. Sri Lanka is, of course, an extreme case. Bangladesh, I was a little surprised at why it has to go for the IMF bailout at this point in time. But once again, Bangladesh is also dependent on one or two categories of products whose exports was actually fueling the economy. Pakistan, of course, is a highly indebted economy. It is indebted because of the Chinese investments, which have turned into debt for the country. So, fortunately, I think there is no scope for making any comparisons between any of these countries with India. India is in a different league altogether right now. Look at its foreign exchange reserves. In spite of having spent $50 billion of forex reserves on maintaining the rupee in the last 3 months or so, you have a forex reserves level of $573 billion. So, and what I understand is that the Reserve Bank of India is still capable of holding on to the rupee value with the might of its forex reserves. But then Sri Lanka and Pakistan will need not just an IMF bailout, but also a credible recovery action plan, which is dependent on also the kind of political system they can establish in those two countries, which can take those hard but necessary steps for reviving the economy. My mind goes back to what happened in India in 1991, not similar, but somewhat similar, and the political establishment at that time took those necessary steps and bailed the Indian economy out of that crisis. So therefore, IMF bailout is important for Sri Lanka and Pakistan, but equally important would be the political establishment in these two countries who can take those hard and necessary steps to bring the economies out of the current crisis that they are faced with. Well, let's have a look at the U.S. market now. U.S. stock indices rallied yesterday for a second day in a row, with all three major indices ending up more than 1%. The U.S. share indices rose as data showing a second consecutive quarterly contraction in the economy fueled investor speculation. The Fed Reserve may not need to be as aggressive with interest rate hikes as some had feared. The Dow Jones Industrial Average gained 1%, the S&P 500 rose 1.2%, and the Nasdaq Composite Index rose 1.1%. AKB, you spoke about the U.S. economy and its performance when we were discussing Sensex and Nifty. Employment figures in the U.S. have gone up, for instance, by 372,000 on the total non-farm payroll employment just for the month of June. How is it that the U.S., despite facing pressure on inflation,
is able to increase employment in the economy? Well, one simple explanation is that, employment is not a lagging indicator, whereas inflation and growth or the lack of it or contraction is a lagging indicator. What I mean is that these inflation numbers and the growth numbers are referring to a period that had gone by, whereas the unemployment figure or the employment figures are actually about the figure that are going in ahead of you. In a sense, it is the employment figures that took place in that period, which is going to impact. So therefore, it is possible that there is inflation, there was contraction, but still the economy is still looking for more investments, more economic activity, and looking for more people to be hired. Now, there is always a lag between and contraction in the economy and the job situation in the market. So probably we will see the employment figures reflect that contraction stage of the economy maybe a few weeks from now, and when we discuss those numbers, inflation and unemployment and the growth in the next 3 months or so, probably you will see a correlation between all the three. Well, let's have a look at the oil market now. Oil prices today rose around 2% in intraday trade. Crude prices gained amid supply concerns and a weaker U.S. dollar as attention turns to what OPEC and allies, including Russia, agree at a meeting next week, marking the end of the 2020 output reduction pact. Brent crude was trading at $109.20 per barrel, while WTI crude prices were at $98.20 per barrel. Briefly tell us about this output reduction pact that Russia and OPEC are discussing right now. Well, if there is an output reduction, it will obviously aimed at bolstering the revenues of the OPEC countries. They have already benefited hugely from a perk up in the crude oil prices. But for the rest of the world, the countries that consume the crude oil, for them it will be bad news. For India, it will be bad news, because any cut or stabilizing the production at a certain low level would mean the supplies will be less, and therefore the crude oil prices, which right now are probably relatively more manageable than what they were about a month and a half ago, will be a cause for some headache even in India. आइए चलें सर्राफा बाजार। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त वायदा कारोबार में सोना 105 रुपए घटा 51,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया। सितंबर आपूर्ति वाली चांदी 100 रुपए की मजबूती से 57,720 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। वहीं न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में अंतर्दिवसीय कारोबार में सोना मजबूत होकर $1,774 प्रति आउंस पर कारोबार कर रहा था। उधर चांदी भी मजबूती के साथ $19.95 प्रति आउंस पर चल रही थी। एक भी बहुत संक्षेप में सोने की स्थिति पर आपकी प्रतिक्रिया हम समझना चाहेंगे। पिछले दिनों सोने के आयात में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिली है, क्या दर्शा रहा है ये? देखिए, सोने की आयात अभी फेस्टिवल सीजन आने की है, तो मैं समझता हूँ सोने की आयात में तो वृद्धि होगी और सोने के दामों में भी थोड़ी बहुत इजाफा हो सकता है। पर सोने की एक बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है कि जो इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का इनॉग्रेशन आज अहमदाबाद में जो गांधीनगर में हुआ है, मैं समझता हूं उससे गोल्ड मार्केट में एक बहुत बड़ा एक बदलाव आ सकता है। प्राइस डिस्कवरी में बहुत बड़ी एक सहायक बन सकती है। मैं समझता हूं कि बुलियन एक्सचेंज का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा आज ये बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट गोल्ड मार्केट के लिए रहेगा। हो सकता है। बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। And before we close, a reminder of the headlines. Domestic stocks rise more than 1% amid mixed global cues. Sensex reclaims the 57,500 mark. Nifty regains the 17,000 level. Rupee appreciates by 49 paise against the US dollar, and Brent crude oil climbs above $109 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Market Mantra.